स्टबल बर्निंग जो नॉर्थ इंडिया रे कौन प्रॉब्लम हो माने जेमति तमे धान जेतले धान तमे करूचो धान काटुचो धान काटिला परे जोडा रही जाय हैला सेटा को स्टबल बर्निंग बोली जिनसटा को कुहाउची हैला आजि काली कर नो इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस हैला एज ओल्ड प्रैक्टिस ता जोटा कि से माने को जगह रे मेनली हुए हैला आज हम सेटा भी जानिबा पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी ये सब जगह रे हुए पर्टिकुलरली स्टबल बर्निंग रो इफेक्ट जो एयर पॉल्यूशन होची हैला को जगह रे हैला गोटे हला तमर पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी ईस्ट यूपी तो बहुत बड़ा है ईस्टर्न पार्टा नुह वेस्टर्न यूपी पार्टा मेजरली इंडिपेंडेंस परे परे कौन है लेट 1960s रे इटा ग्रीन रिवोल्यूशन कांसेप्ट इंडिया रे इनकॉर्पोरेट करा है इट इज बिकॉज इंडिया रे पॉपुलेशंस बढ़ुतला और फूड क्राइसिस वाज बिकमिंग ओके एन इनएविटेबल सो टू कोप अप विथ द सिचुएशन आम हाथ रे ओनली वन सॉल्यूशन वाज दैट वी हैव टू गो फॉर द योर इंटेंसिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप्स 2010-11 रु जदि आमे देखिबा हला ई लास्ट 2 वर्ष तळे 2022 पर्यंत सेटा बढ़ी छि पाखापाखी 182%। तमाने गोटे फार्मर रो काहे कि लोभ होबनी एथरे कोन जदि मु कहबी एथरे हम जानिबा कोन जदि हम एनालिसिस करिबा जानिबा पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सिना फार्मर मानकर कष्टटा को सपोर्ट करछि तांगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को सिक्योर करछि बट लॉस का रहिछि एनवायरनमेंट रो लॉस का रहिछि सॉइल हेल्थ रो लॉस का रहिछि ह्यूमन हेल्थ रो हला एंड ओवरऑल इकोसिस्टम रो लॉस इज काहे कि फार्मर को इकोनॉमिक सिक्योरिटी देबा को जाय ओनली टू आफ्टर 2013 गवर्नमेंट हैज रियली कंसर्न और realize the seriousness of this your foggy situation over the North India during winter time, right? But 40 years भीतर बहुत किसी ग्रोथ हो गया साथी पार्टी बेसिकली कौन था सही समय रे 60 डेज रो क्रॉप माने सही समय कौन हला देखो एक तो ग्रीन रिवोल्यूशन से ना ग्रीन रिवोल्यूशन परे परे संगे संग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाला व्हीट आउ राइस रो से माने पूरा माने रेकलेसली फार्मर माने चली चले देयर इज नो स्कोप कान गवर्नमेंट ऑलरेडी एमएसपी पई दे देला समान को ठीक अछि सो तांकर से जो जिनस तांकर प्रॉफिट करिया पे सवाले कौन कले हला देयर इज एन स्कीम दैट इज पर्टिकुलरली सेटा साथी पैडी बट मेजरली ओवर एक्सपेक्टेड तमे देखु सही तीनटा जगह रे मेनली पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी और राजस्थान रे किछि पॉकेट रे देखु छ क्रिटिकल जोटा के देखले तमे ओवर एक्सप्लॉइटेड रेड कलर क्रिटिकल हला येलो आउ तमरो क्रिटिकल येलो सेमी क्रिटिकल हला तमरो टिके ब्लूइश कलर सस्सी हला आउ पूरा योर फेडेड ब्लू आसु तमरो सेफ कलर फेडेड ब्लू राम ओडिसा भी अछि तो माने आज जेंति मु कहली कि दिल्ली रे AQI आज सकाळे अछि 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स माने सेतरे हम निश्वास नहीं परिबनी इते स्कॉफिंग माने जेंति लागियो कि हमर निश्वास गळा के चिपी दोछि एई भले कंडीशन से बे पूरा एंटायर नॉर्थ इंडिया रे हला दिल्ली पंजाब हरियाणा हला एबु देखिबा टेस्ट डेरिवेटिव देखा हला कि विद इन लेट्स से 1 मंथ भितर माने नियर अबाउट 10% तमर जो पेशेंट्स एडमिटेड होचंदी कोठी हॉस्पिटल इट इज बिकॉज ऑफ दैट अफेक्टिंग टू सीवियरली टू देयर यू नो योर पल्मोनरी सिस्टम गवर्नमेंट तो एटा चिंता कला किंतु फार्मर्स माने एटा भाबुचंदी फार्मर्स आर थिंकिंग दैट दे आर वेरी मच स्केप्टिकल मींस डाउटफुल दैट वेदर से मानकर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ताको मिलुथला सेटा आ रहिबो कि नै नेक्स्ट पॉइंट again establishment of stubble banks then how to do such all things what we have discussed okay then all such can be done when the stubbles are accumulated at a point or they are collected at a point for that stubble banks are established in the respective villages welcome everyone welcome to PW family OPSC Wallah एठी before that one हम start करिया पूर्वरु गोटे नुवा टॉपिक नै के आछि ता पूर्वरु मु टिके कहि दिए त माने जानो योर OPSC वाला तरफ रे अपन कोन कोर्सेस प्रोवाइड कराउची OPSC वाला तरफ रे जदि म कहबी योर कलिंगा वीर बैच जोटा कि ओडिशा पुलिस कांस्टेबल पई दैट इज 699 सेमति सक्षम 2.0 तमर आछि OCS प्रीलिम्स कम मेंस जोटा कि 4499 ओके 4500 भीतर सेटा आछि प्लस जदि तमे क्लियर 316 होछो इट इज लेस देन 2000 आल्सो बीजो बैच जोटा कि OCS प्रीलिम्स पई दैट इज 999 Odisha district police batch जोटा junior clerk that is 1299 and Odisha exams महापैक that is your तेथरे की सबुथरे तमर आस्ति महापैक रे 2.0 that is 4999 and Diksha batch that is also integrated OCSC that is 1999 तो एते सारा तमर batch दिया होची that is in a very affordable price and for that I would like to say that कोनोसी competitive exams government job पाया पे समस्त गोटे ड्रीम थाए and here OPSC वाला PW family तरफ this
particularly affordable rate समस्त provide कराई everyone can access all such. Okay, so before that मु एति कहया चाहिबी कि this course, all such courses can change your life pattern, life events. Okay, so आज मु नेवा कहबी गोटे नुआ कंटेम्पररी टॉपिक्स जोटा कि मु स्टार्ट करबी जोटा कि रिगार्डिंग योर इश्यूज करंट रिलेटेड, दैट इज स्टबल बर्निंग इन नॉर्थ इंडिया, ए क्राइसिस फॉर हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड फार्मर. गोटे गोटे करके सब जिन बुझा. दिस ए वेरी कंटेम्पररी टॉपिक जोटा कि वर्तमान खेज रे जोटी कि तुम देखुथबो हला कि स्टबल बर्निंग जो नॉर्थ इंडिया रे कौन प्रॉब्लम होची. तो व्हाट इज स्टबल बर्निंग पर्टिकुलरली, व्हाट इज स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग माने कौन प्रथम एटा बुझिबा. स्टबल बर्निंग माने कौन हैला? स्टबल बर्निंग माने जदि मु कहिबी स्टबल बर्निंग हैला पर्टिकुलरली. ओके, स्टबल बर्निंग जदि हम देखिबा देखुछ एटी गोटे खेतरे कौन हेची. ओके, द रेजिड्यूज पर्टिकुलरली जदि कहिबी क्रॉप रेजिड्यूज को जळा होची. एटी तुम देखिबो क्रॉप रेजिड्यूज को स्टबल सब देखा होची गोटे आ चारि आडे पूरा धुआं धुआं हेची. दैट इज कौन लिखा है पर्टिकुलरली स्टबल बर्निंग ऊपर है. जदि मु कहबी कि व्हाट इज स्टबल बर्निंग के जानिबा. व्हाट इज स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग बेसिकली इट इज ए प्रैक्टिस वेयर फार्मर्स बर्न द लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ. कौन करे? इट इज ए प्रैक्टिस जोथरे कि कौन करते फार्मर्स बर्न द लेफ्ट ओवर ऑफ द स्ट्रॉ. जेतेबेले माने चाष कला परे ठीक अच्छे फार्मर कौन करे बर्न कर दियंते लेफ्ट ओवर. ये देखुछ तुम माने जेमति तुम धान जेते धान तुम करूछ धान काटुछ धान काटिला परे जोटा रही जाए हैला सेटा को स्टबल बर्निंग बोली जिनसटा को कहउछ हैला जोटा कि रही जाए जति कि रेसिड्यू. So it is a practice where the farmers burn the leftover straw हैला. leftover straw माने छण हम जोटा कि कहू छण जोटा कि हैला leftover straw, or in English it is also called as your haze भी कहा जाए. ठीक अच्छे, haze straw, or we can say it is your haze also, right? So from their crops after harvesting to reduce the time between harvesting and sowing हैला. तामाने लगेबा पूर्वरु सोइंग माने तमर हबो तमर जेतबळे बीज रोपण करा जाय हैला खेतरे आउ हार्वेस्ट हला ताको अमल करा जाय. सो ता भीतर टाइम लैग को कम करिया पे समान कोन करचोंती फ्रॉम देयर क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग टू रिड्यूस द टाइम टाको रिड्यूस करिया पे समान एई अप्रोच ता समान नउचोंती, राइट. In detail, the stubble burning is the process of setting fire. ठीक अछि, stubble burning is the process of setting fire को set करिवे हैला to the straw stubbles, particularly to the straw stubbles paddy crops residues हैला paddy crops residues को हैला setting fire to the your straw stubble from the field in preparations for sowing wheat. ठीक अछि, बेसिकली कोन करा जाय जदि मु डिटेल ले कहबी स्टबल बर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग फायर सेट करा जिवो. ठीक अछि, स्ट्रॉ माने जोगडा कि रही गले हैला जो छण काटिला परे जंती धान कटा हला सपोज मु कहूची कि धान कटा हला परर नेक्स्ट स्टेज हम कहूची धान कटा हला पर सितरे कोन करे माने ताकू फायर लगे देले. ठीक अछि, फायर कले तो स्ट्रॉ स्टबल पैडी क्रॉप्स रेसिड्यू माने धान जोटा रही गले फ्रॉम द फील्ड इन प्रिपरेशन फॉर द सोइंग व्हीट लगेबा पूर्वरु समान कले. माने जदि मु कहबी प्रथम हम आसला खरीफ सीजन, खरीफ परे रबी परे जेठ, खरीफ रे तमर कोन होची धान तमर अमल करचोन खरीफ सरला परे खरीफ संगे संगे सरला परे अक्टोबर नवंबर बेलकु तमर कोन होची से माने व्हीट लगौचोन. सो एई जो गैप रे समान कोन कले सिटी फायर कले. आगु जानिबा फायर लगे देले दिस इज द मेथड यूजुअली रिक्वायर्ड वेयर combined harvesting methods. This is ए जो मेथड ता हैला this method is usually required where combined harvesting methods have been used हैला. combined harvesting methods ता यूज करा होची हैला. method has been used as this farming practice can leave vast amount of crops residues behind. तो इथरे कोन हुए जो करा जाय this farming practice particularly this farming practice can leave vast amount of crops residues behind. ए जो प्रैक्टिस करे जदि माने जनरली एथि पे करा जाय काहे कि ना गोटे वास्ट अमाउंट रो क्रॉप्स रेसिड्यूज जोटा कि रही जाय से जो कोन कोन से जाडी दियन. सो इट इज एटा हला आजि काली कर नो इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस हला. एज ओल्ड प्रैक्टिस ता जोटा कि से माने को जगह रे मेनली हुए हला. आज हम सेटा भी जानिबा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ए सब जगह रे हुए हला. देखिबा को इट इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. जनरली कोन हुए इट इज अ मेजर कॉज ऑफ योर एयर पोल्यूशन हैला.
air pollution in parts of northern India including Punjab, Haryana and western UP. এই তিনিটা জায়গা হলা majorly vulnerable to your particularly stubble burning रो effect जो air pollution होची हला को जगह रे हला गोटे हला तमरा पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. ईस्ट यूपी तो बहुत बड़ा हला ईस्टर्न पार्ट टा नुह वेस्टर्न यूपी पार्ट टा मेजरली देखिबा एटी तमे देखुछ हला किछि फार्मर्स नॉर्थ इंडिया रे हला पंजाब हरियाणा एटी से माने कोन करचंदी तांकर सल्ला परे से माने स्टबल बर्निंग करचंदी. जस्ट लुक एट हियर छण हला छण को से माने जळचंदी. दे आर बर्निंग स्टबल्स हियर. ओके आगु जिबा पैडी इंटेंसिफिकेशन इन पंजाब हरियाणा has its own origin. जदि हम देखिबा origin टा कोठी हला एठी हम जानिबा origin टा कोठी ता पूर्व मु कहबी कि केमती एटा हमर आसिला how it comes to the news. Okay माने what is the problem or the origin of this problem, let us know this one, how it comes to a particular alarming point. now जदि हम देखिबा कि stubble burning रो effect है now it is very much alarming, right? so आगे जानिबा कि origin टा कोठी आसिला हला. let us know जदि मु देखिबी कि पैडी इंटेंसिफिकेशन इन पंजाब हरियाणा जदि देखिबो it long stretches back to origins in the green revolutions. हला green revolutions हम जानि चंदी green revolutions after independence पर इंडिया रे फूड क्राइसिस हेतला काहे ना पॉपुलेशन बढ़ुतला तो सेही समय रे कोन हला ग्रीन रिवोल्यूशन कांसेप्ट आसला जोतरे कि हम जानि चंदी द फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन जदि हम कहबो इंडिया तरफ दैट इज late Mr. M.S. Swaminathan, okay, agriculture scientist हला से he is no more गत वर्ष ए वर्ष ही से चली जाइले. ओके किछि मास तळे से जाइथिले. देन आउ जदि हम देखिबा कि फॉर देन नॉर्मन बोरलग हला नॉर्मन बोरलग बेसिकली ठीक अछि अमेरिकन जर्मन योर एग्रो इकोनॉमिस्ट हला एग्रो साइंटिस्ट बेसिकली ठीक अछि. सो एमानकर मेजर हला ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड रे कुहा जे नॉर्मन बोरलग को कुहा जे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आउ इंडिया रे एमएस स्वामीनाथन हला ए दी जन को कोऑपरेशंस परे तम हमरो इंडिया रे ग्रीन रिवोल्यूशन कांसेप्ट योर इंटेंसिफाई हेतला हला. so the green revolution was a set of policies introduced by the Indian government during late 1960s. independence pore pore कोन हला late 1960s रे एटा green revolution concept इंडिया रे इनकॉर्पोरेट करा हेतला. it is because India populations बढ़ुतला और food crisis was becoming okay an inevitable. so to cope up with the situation am hatre only one solution was there that we have to go for the your intensification of food crops or cereals, okay, to boost the crop yields in Punjab, Haryana and western UP. so green revolution जतले इंडिया रे इंप्लीमेंट करा हला पर्टिकुलरली टारगेट रखाला को जगह को योर पंजाब, हरियाणा and western UP एई जगह गुडा को समाने मेजरली फोकस कले. अच्छा आगु देखिबा these policies introduced high yielding varieties HIV seeds of rice and wheat. माने कोन कले इंट्रोडक्शन कले high yielding variety of your HIV अच्छा HYV high yielding variety हला रख कर को आजे कोन HYV high yielding varieties seeds for rice and wheat. the development of groundwater irrigation facilities out kon kara hala the development of groundwater irrigation facilities eta bi rakhala and the mechanization of farming practices hela farming practices se kon mechanization farming practices which allowed farmers to harvest more crops at faster rate hela jote ki allow kala farmers मान to harvest more crops at a faster rate than before. तो HYV सीड्स जोटा कि जनरल के हाई यील्डिंग वैरायटी एटा को वहां पर जस्ट माने कंसाइजली हम कहूची इट इज हाई यील्डिंग वैरायटीज आर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स माने इंडिजिनियस जोटा अवेलेबल होची सीड्स लेट्स से मुकेली राइस रो हला सोनालिका कल्याण एटा सब राइस और व्हीट रो वैरायटीज ओके ताको जेनेटिकली मॉडिफाइड कराला कोन टू यील्ड द क्रॉप्स तांकर माने पर्टिकुलरली क्रॉपिंग रो तांकर जो प्रोडक्शन टा बेसी करिया पे हाई यील्डिंग वैरायटीज okay before. Despite changes to the environment and economy since 1960s farming policies continue to favor the paddy wheat monoculture system हला जदि म कहबी despite changes to continue favor the paddy wheat हला जदि 1960s परे फार्मिंग पॉलिसीज कंटिन्यू कोन हला हम इंडिया रे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे कोन हला पॉलिसी थिला से कंटिन्यू कला कोन फेवर कला माने सपोर्ट कला एटे जो लिखिलो हला कंटिन्यू टू फेवर माने सपोर्ट आ माने हला कंटिन्यू माने सपोर्ट कला
support to the हैला योर पैडी व्हीट मोनोकल्चर सिस्टम। पैडी व्हीट माने माने राइस पर जो व्हीट टा मोनोकल्चर सिस्टम टा को सेटा को जो एज ओल्ड प्रैक्टिस टा को से सपोर्ट कला। ओके व्हिच कंटिन्यूज टू बी डिप्लीट दिस रीजन्स नेचुरल रिसोर्सेस। सो धीरे धीरे कोन हला कंट्री ए जो रीजन रो नेचुरल रिसोर्सेस माने पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी से धीरे धीरे ताकू डिप्लीट कला माने ताकू ता ऊपर हला प्रेशर्स पकेला आ एक्सट्रैक्ट कला हला। आगु जीवा देखिबा फर्दर द इंट्रोडक्शंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पुणी कौन है आगु को जदि देखिबा हला इंट्रोडक्शंस ऑफ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस माने हला एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रे कौन थाए पर्टिकुलरली मिनिमम सपोर्ट प्राइस जोटा सेंट्रल गवर्नमेंट हमर इंडिया रे करी इट इज बिकॉज टू फैसिलिटेट द फार्मर्स पुअर फार्मर्स ओके टू फिक्स ए पर्टिकुलर रेट कि तमे एतिकी भाई 100 केजी धान कल कि 100 केजी गहम कल कि 200 केजी कल आकु आमे एतिकी रेट रे तमठु न तमर आ कोनोसी लॉस होबनी दैट प्राइस इज फिक्स्ड। तो एटा जिंस होला कि ओरिजिन में अगेन हम कहू ओरिजिन कोन पई ए जिंसटा प्रॉब्लम बढ़ी बढ़ी चल हला। तो से माने कोन कले चासी माने जेहेतु तांकर गोटे रेट फिक्स हे गेला कि भाई आमे एतिकी कले हमको एतिकी पैसा हम लोग का कुछ नुकसान नहीं होगा ठीक है। टू कोप ऑफ दिस वन तांका मन रे गोटे लोभ रहला टू गेट इट दैट वन से माने कोन कला गैप देले माने संगे संग रोटेशन कले संग संग धान लगेले पुनी काटिले पुनी व्हीट कले स्टबल। सो ए जो गैप टा को से माने जो माने देयर इज एन अदर मेकानिज्म कि से माने हेज को स्ट्रो को से माने वर्तमान जेमति गवर्नमेंट कोन कला धीरे धीरे वर्तमान टिके पॉज नो से माने अगर पॉज नो नोतले पॉज नै कि से माने कोन करचोंदी ताकू योर ऑर्गेनिक मैन्योर बनौछन ताकू डिकंपोज करी कि से माने ताकू वर्तमान जेमति पर्टिकुलरली आगु को तुम कहबी डिकंपोज करा होची ताकू हला माने कंपोस्ट करा होची कंपोस्ट कराई ताको मैन्योर करा होची ता पई तो समय दरकार भाई 20 दिन 25 दिन मासे तो दरकार नै किंतु से माने सेही जिंसटा आगुरु करू नथुले हला। एटा कोन पई ए एमएसपी प्राइस पई जानिबा आगु को हला द इंट्रोडक्शंस ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्हिच प्रोवाइड्स फार्मर्स ए गारंटेड इनकम फॉर देयर क्रॉप्स हला। फार्मर्स मानन को तांकर गोटे गारंटेड इनकम रो तांको मिलुतला हला पर्टिकुलरली हला प्रोवाइड्स फार्मर्स ए गारंटेड इनकम फॉर देयर क्रॉप्स हैज कंट्रीब्यूटेड दिस unsuitable cropping practice hela has contributed kaun kala this unsuitable practice as the MSP for paddy has increased by 182% since 2010-11। can you imagine 2010-11 रु जदि हम देखिबा हला ई लास्ट 2 वर्ष तळे 2022 पर्यंत सेटा बढ़ी छि पाखा पाखी 182%। तमाने गोटे फार्मर रो काहे कि लोभ होबनी एथरे कोन जदि मु कहबी एथरे हम जानिबा कोन जदि हम एनालिसिस करिबा जानिबा पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सिना फार्मर मानकर कष्टटा को सपोर्ट करछि तांगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को सिक्योर करछि बट लॉस का रहिछि एनवायरनमेंट रो लॉस का रहिछि सॉइल हेल्थ रो लॉस का रहिछि ह्यूमन हेल्थ रो हला एंड ओवरऑल इकोसिस्टम रो लॉस इज काहे कि फार्मर को इकोनॉमिक सिक्योरिटी देबा को जाई कि सो एते बडा डिसबैलेंस हेबा गत न देयर समहाउ इट हैज टू बी बैलेंस हला चाषी रो भी लॉस माने पूरा न हो कि एनवायरमेंटली पूरा खेती न हो लोकंकर हला आज का डेट रे हेल्थ देखा हो कि बहुत सारा क्रोनिक डिजीज बाहर हला हला पर्टिकुलरली अस्थमा ब्रोंकाइटिस हला कैंसर्स लंग्स रो कैंसर बहुत बड़े जिंस प्रॉब्लम हो सो ए जिंसटा वर्तमान आगु को जानिबा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जस्ट स्टे विथ मी ओके। आगु देखिबा मेकिंग इट ए डिजायरेबल क्रॉप टू सो। सो ए जो एमएसपी जिंसटा कोन कला एमएसपी आहुरी कोन कला तांकर फार्मर मानकर लोभटा को आहुरी बढ़ाई देला कि नहीं हमको एतिक पैसा मिलछि आमे आउट की पाइबा हला। एई केस रे से माने कोन कले से माने गैप देलेनी ठीक अछि माने धान सरला हार्वेस्ट संगे संग से माने कोन कले हला योर राइस पर संगे संग से माने व्हीट को कले देयर इज नो फर्दर गैप फॉर एटलीस्ट 20 days और 1 month। देखिबा विथ एश्योर्ड हला with assured prices for the paddy हला जोटा कि गवर्नमेंट करा तांको assured prices for the paddy farmers in Punjab Haryana and Western UP हला farmers in Punjab Haryana and Western UP started to grow paddy during summer months हला during summer months रे समने कोन कले started to grow their paddy हला during summer months after the harvest of wheat ठीक अछि। पूरी जेमति कोन कला माने पर्टिकुलरली एटी समने कोन कले राइस सरला राइस पर तमरा व्हीट आसिला ठीक अछि माने जदि कहबी राइस राइस पर पुनी आसला तमरा व्हीट व्हीट पर अगेन पुनी आसला राइस हला। तो एटा हला तमरा हार्वेस्ट हला केते
पुणी समर मंथ रे ये हार्वेस्ट हला एटी मु लिखिबी हला हार्वेस्ट इन समर ठीक अछि के व्हीट पुणी ये हला पुणी हार्वेस्ट बिफोर विंटर हैला तमाने देयर इज नो गैप देयर इज ए साइकिल एटी देखु गोटे साइकिल चल विंटर समर माने जेमती समर हो ये पुणी शो कराला एटा हार्वेस्ट हला पुणी जेमती विंटर आसिया पूर्व ये तमरो हार्वेस्ट हला राइस हार्वेस्ट हला व्हीट शो हला सो दिस साइकिल हैज डिस्टर्ब द सिस्टम पुणी देखिबा कोन पैडी कल्टीवेशन पर्टिकुलरली पैडी कल्टीवेशन ओके पैडी कल्टीवेशंस जदि कहबी has expanded over the time period harvest हला expanded over the time period so paddy cultivation कोन हला धीरे धीरे expanded over the time period so ए जो जिंसटा हला time period माने जदि मु कहबी 1970 हला 1971 73 रु नेकी till 71 73 रु नेकी till your 2011 13 मतलब 40 years पर्यंत तमर ए जिंसटा जोशोरे चले एक्सपैंड करी गला माने इफ आई से ओवर द टाइम पीरियड ता माने 1970 हला 3 रु नेकी मु करबी हला पर्टिकुलरली 1973 रु नेकी 2013 पर्यंत हला एई पर्टिकुलर जगह रे माने बड़ी चला 1973 रु 2013 भीतर 40 वर्ष पर्यंत से एक्सपैंड करी राइट बट 13 पर रियलाइज हला नहीं इट इज जनरली प्रॉब्लम तुम देखियो जो वर्तमान नॉर्थ इंडिया रे जो प्रॉब्लम रहउची फॉगी स्काई आज भी देखो सकाळ सकाळ दिल्ली रे AQI इंडेक्स आज सकाळ अछि 500 कैन यू इमेजिन लोकन को निश्वास नेबार असुविधा होची पीपल आर स्टॉपिंग चॉपिंग बहुत असुविधा होची सो पर्टिकुलरली ए जिंस 2013 पर 10 वर्ष हला टिके माने गवर्नमेंट टिके याकू सीरियसली नोची चेष्टा करूची बट 2013 पर्यंत ए जिंसटा जेमती सेमती बड़ी चलतिला माने देखो इट इज ए गैप ऑफ माने वी कैन कवर 40 इयर्स कैन यू इमेजिन 40 वर्ष पर्यंत ए जिंसटा बड़ी चलतिला राइट नेक्स्ट देखो एटी कोन हितला तापर देखो एटी कोन देखा होची गोटे जमीरु तमरो पानी ये होची ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस जानिबा ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस ऊपर कोन हला इंपैक्ट ऑन ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस तो हमें ओरिजिन जानले कि केमती होची हला ओरिजिन केमती कोन पई केमती तमरो स्टबल बर्निंग का धीरे धीरे बढ़िला जोटा कि तुमको एटू एनालिसिस कहली 1973 मसिया 2013 भितरे जो जिंसटा हाउ इट टुक ए शेप एंड बिकमिंग एक्सपैंडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम okay and there is no check and monopolies it is only to after 2013 government has really concerned or the realized the seriousness of this your foggy situation over the north India during winter time right but 40 years bhitar bahut kichu growth he gala hala regarding this crop rotations MSC price upare hala बर्तमान देखिबा ग्राउंड वाटर रे कोन लिखले द इंपैक्ट ऑफ ऑन ग्राउंड वाटर डिप्लेशंस माने ए जो 40 इयर्स हला आ भितर कोन हला ग्राउंड वाटर ऊपर कोनटा इंपैक्ट पडिला कोन प्रेशर हला जानिबा चा सोइंग पैडी ओवर टाइम हैज लेड टू शार्प डिक्लाइन इन सच स्टेट्स सोइंग पैडी जो हला कोन हला ओवर टाइम ऊपर हैज लेड टू शार्प डिक्लाइन इन सच स्टेट्स ग्राउंड वाटर हला ई स्टेट रो ग्राउंड वाटर ऊपर कोन हला डिक्लाइन ही चला माने कमी गला हला डिक्लाइन मींस योर लेसनिंग ठीक अछि लेसनिंग डिक्लाइन मींस लेसनिंग ग्राउंड वाटर फार्मर्स यूज्ड ट्यूबवेल्स हला फार्मर कोन कले यूज कले ट्यूबवेल यूज कले टू इरिगेट साथी पैडी सेही समय गवर्नमेंट गोटे स्कीम करतला कोन टू इरिगेट साथी पैडी साथी कोन जानिबा साथी पैडी दैट इज ए 60 डे क्रॉप साथी पैडी बेसिकली कोन थला सेही समय 60 डेज रो क्रॉप माने सेही समय कोन हला देखो एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन सला ग्रीन रेवोल्यूशन परे संगे संग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाला व्हीट आउ राइस रो से माने पूरा माने रेकलेसली फार्मर माने चली चले देयर इज नो स्कोप कान गवर्नमेंट ऑलरेडी एमएसपी पई दे देला से माने ठीक अछि सो तांकर सेही जो जिंस तांकर प्रॉफिट करिया पई से माने कोन कले हला देयर इज एन स्कीम दैट इज पर्टिकुलरली सेटा साथी पैडी during May and June instead of waiting for natural rainfall during the monsoon months. समान कौन कले जो साथी पैडी की समाने ताको माने 60 डेज रे हबा पई समान कौन कले ट्यूबवेल बोरवेल रो माने ट्यूबवेल इरिगेशंस रो हला समान कौन कले तार हेल्प नेले इंस्टेड ऑफ योर वेटिंग फॉर द नेचुरल monsoon months
नेचुरल मानसून रेन्स को से अपेक्षा कले से कौन कले ट्यूबवेल इरिगेशन कले देखुच ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हेबार पंजाब हरियाणा आउ वेस्टर्न यूपी सबुठ बड़ कारण है ट्यूबवेल मानसून सुपर मानसून हो न हो किसी फरक पड़लानी किंतु जिनस कौन है ग्राउंड वाटर को से एक्सप्लॉइट करिवारे लागि छन there is like high exploitations of your groundwater and this makes the situation very much vulnerable right ठीक है months contributing to a decline in groundwater है decline in the groundwater in पंजाब कौन कला भितर है धीरे धीरे कौन कला पंजाब ये जिनसर ये प्रॉब्लम जो आग्रावेट हो पंजाब धीरे धीरे रियलाइज कला कि किसी तो गोटे कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है अभी है सो इन पंजाब enacted laws to protect the shrinking groundwater level. Punjab कौन कला enacted your laws shrinking groundwater level by imposing fixed paddy sowing and transplantation timescales under the Punjab Preservation of Subsoil Water Act 2009. So eventually what Punjab did? Punjab कला कौन कि enacted laws कला जो तरीके कौन कला imposing fixed paddy sowing है and transportation time scale. टाइम स्केल को कौन कला पैडी जो सोइंग माने बीज रोपण जो करा जाए बीज रोपण से गोटे फिक्स टाइम स्केल कला ठीक अछि एंड ट्रांसपोर्ट एंड योर ट्रांसप्लांटेशंस आल्सो को केस रे कला अंडर द पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 तो पंजाब किछि फील कला कि नहीं समथिंग इज गोइंग रॉन्ग सो पंजाब हैज एनैक्टेड ए लॉ थ्रू व्हिच योर सोइंग ऑफ योर पैडी okay and transplantations has a fixed time scale there is no particularly rampant or irregularity anytime jodi erratic way re tame kari paribani there is a fixed time okay so these time scales shorten the time available to prepare the land thus making stubble burning a compelling option to prepare the land quickly before the next sowing period jehetu punjab eta impose kala so farmers mane kon kale hela there is certain time certain माने particularly एही particular time में ही sowing हे परिबो से फिक्स कर देला सो फार्मर माने कोन कले आहुरी तरतर है कि कोन कले स्टबल को जानिबार लागले एक तो माने एमती प्रॉब्लम थिला से माने आहुरी जिंसरा कोन कले हला shorten the time available to prepare the land thus making stubble burning a compelling option to prepare the land तो से जो जिंसटा गवर्नमेंट रो से माने इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग द योर particularly organically manure से जो ऑर्गेनिकल मैन्योर टाको से प्रिपेयर न करिकी से कौन कले कि जेहेतु हमर टाइम बंचिला हैला से छण टाको से ऑर्गेनिक वे टाको डिकंपोज कले बायोलॉजिकली डिकंपोज दे डोंट प्रिफर द फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा दे डू नॉट प्रिफर द बायोलॉजिकल डिकंपोजिशन रादर दे चूज ओके ए शॉर्टकट दैट इज अ बर्निंग ऑफ द स्टबल्स again it is a good question asked whether it is an induced effect or else they are not properly guided by the government of Punjab or Haryana with the respective farmers in the respective states okay आगु जानिबा पुणी हला to the next sowing period again देखो एटी गोटे क्लियर पिक्चर हमें देखिबा कि ग्राउंड वाटर सिचुएशन सही समय कोन थिला ओके टिपिकली देखिबा वर्तमान देखिबा दिस इज द स्टेट योर पंजाब इफ आई से दिस इज योर पंजाब दिस इज योर हरियाणा राइट दिस इज योर हरियाणा एंड ए पार्ट हला तमरा पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूपी ठीक अछि वेस्टर्न यूपी हला वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आउ दिस इज योर राजस्थान हला ए पर्टिकुलर जगह तमर कोन हो को जगह डिप्लीशन तमर हे एठी देखो बोला हला 2020 हला टोटल नंबर ऑफ असेसमेंट यूनिट्स 2017 ने केते थिला ग्राउंड वाटर 6881 हला असेसमेंट यूनिट्स 6965 2000 योर 65 इन 2020 सेकंड एटी देखो सेफ ए जो कलर हला सेफ इंडिया ए जगह ग्राउंड वाटर डिप्लेशन माने ओडिसा में जदी हम देखिबा वी आर इन सेफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हमर एते हेनी हला जदी 2020 माने लास्ट 3-4 वर्ष तळ कथा कहूची बट जदी ए रिपोर्ट हला सेमी क्रिटिकल आ गोटे रेड जिंसडा हला तमर ओवर एक्सप्लॉइटेड तो एटी तमे देखुचो ए एरिया गोडा पर्टिकुलरली माने कोन हिचंती ए जगह रे ओवर एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर तमे देखुचो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हला ओवर एक्सप्लॉइटेशन तमे देखुचो ऑफ
ग्राउंड वाटर तुम देखुच ग्राउंड वाटर टा एई जगह ही बेसी एक्सप्लोटेशन छैछि तुम देखुच एई पर्टिकुलर एई जगह रे हला आ जगह एठी हमर सेफ अछि आ क्रिटिकल अछि जोडा व्हाइट येलो येलो पैचेस सेही सेम हरियाणा रे हला आउ एपटे किछि पार्ट रे छत्तीसगढ़ रे किछि पार्ट रे महाराष्ट्र रे हला आउ एठी मध्य प्रदेश रे किछि पार्ट रे एमती अछि बट मेजरली ओवर एक्सप्लोटेड तुम देखुच एई तीनटा जगह रे मेनली पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी आ राजस्थान रे किछि पॉकेट रे देखुच क्रिटिकल जोटा कि देखले तुम ओवर एक्सप्लोटेड रेड कलर क्रिटिकल हला येलो आउ तमरो क्रिटिकल येलो सेमी क्रिटिकल हला तमरो टिके ब्लूइश कलर आसी हला आउ पूरा योर फेडेड ब्लू आसी तमरो सेफ कलर फेडेड ब्लू राम ओडिसा भी अछि सो दिस इज द पर्टिकुलर जोतरे तुम देखुचो हला ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन सिचुएशंस इन लास्ट 2 to 3 इयर्स रो रिपोर्ट ता जोटा कि गवर्नमेंट पब्लिश करछि आगु को देखियो पुनी देखुचो एटी स्टबल बर्निंग रो ठीक अछि स्टबल बर्निंग रे टीम कोन देखली consequences of the stubble burning एटी तुम देखुछ स्टबल बर्निंग केमती है कि पूरा पूरा आकाश पूरा एकदम पूरा माने जेमती पूरा पूरा धुआं धुआं पूरा हेजी फॉगी नथिंग इज विजिबल माने दिल्ली रे बे एमती कंडीशंस इवन इफ यू कैन नॉट see smog like the situations as you cannot see 1 meter above also the critical situation 1 meter duration भी तमे गोटे लेंथ भी तमे ऑब्जर्व करि परिबनी so pathetic situations now हला एंड पर्टिकुलरली विंटर मंथ रे एटा होची हला सो हमें जानले कोन ग्राउंड वाटर सिचुएशन माने देखो मु हमें रिलेटेड करी के पढिबा कोनटा इश्यूज होची कोन प्रॉब्लम होची रिलेटेड प्रॉब्लम तुमको ग्राउंड वाटर रे भी कहली वर्तमान देखिबा हला कि गवर्नमेंट माने देखो ए एमएसपी आ मुनाफा चक्कर रे हमर मु तुमको जो इंपोर्टेंस टा कहूची कि पर्टिकुलर हमें डिस्कस करूचंदी कि हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ओवरऑल इकोसिस्टम कि केनते डिस्टर्ब करछ जेंते तळे ग्राउंड वाटर को सेमते हमें सॉइल हेल्थ भी पढिबा सेमते हमें एयर पोल्यूशन भी पढिबा बहुत जगह बहुत जिंस अछि जोटा कि जानिबा ए गोटिए जिंस केते माने टोटली हमर जदी देखिबा इकोसिस्टम को वैरायटी वेरी अफेक्ट करछ ओके सो वर्तमान एटी देखुछ आगु कोन स्टबल बर्निंग हमें जानले कॉन्सिक्वेंसेस कोन माने यार पर्टिकुलरली कोन जो या जो प्रॉब्लम टा होची स्टबल बर्निंग इन इंडिया okay is a major environmental and health issues that can be lead to हैला जदि हम देखियो स्टबल बर्निंग इंडिया रे वर्तमान इज ए मेजर एनवायरमेंटल हेल्थ इश्यू मेजर गोटे एनवायरमेंटल हेल्थ इश्यू जानिबा जस्ट अ मिनिट हैला दैट लीड टू एयर पोल्यूशंस तुम देखुछो हैला कोन होची बर्निंग स्टबल रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस एयर पोल्यूशन समर होची मेजर वर्तमान हमें आज जेंति हम कहली कि दिल्ली रे AQI आज सकाळे अछि 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स माने जेतरा हमें निश्वास नहीं परिबनी इत्ते स्टफिंग माने जेंति लागियो कि हमर निश्वास गळा के चिपी दोची एई बढिया कंडीशन से बे पूरा एंटायर नॉर्थ इंडिया रे हैला दिल्ली पंजाब हरियाणा हैला एबु देखिबा सो बर्निंग कोन करचे रिलीजेस योर टॉक्सिक गैसेस इंक्लूडिंग योर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हैला कार्बन डाइऑक्साइड्स मु कहली CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO हैला केते टॉक्सिक and methane CH4 that contribute to global warming and air pollution can you imagine stubble burning रे से माने जो पेस्टिसाइड यूज करके पूरा जल्दी तंकर प्रोडक्शंस पर हेक्टर बढ़िया पे से चक्कर देखो कोन कोन गैस भरछ कार्बन मोनोऑक्साइड भरछ कार्बन डाइऑक्साइड भरछ पुनी मीथेन भरछ मीथेन इज एक्सपेक्टेड हला इट इज हियर पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक जेतले तमर डिकम्पोज हो मीथेन बाहर देन कार्बन माने डाइऑक्साइड पुनी मोनोऑक्साइड how it is catastrophic to human health can you imagine okay so that contribute to global warming and air pollution this smoke from stubble burning can also create smog and brown clouds that impact air quality visibility and the climate okay ei jodi mu eta kahibi hela this smoke from stubble burning can also create smog brown clouds that impact air quality visibility and climate overall jodi tame affect देखिबो एटा सब जगह तमर कोन करछि हैला क्रिएटिव स्मॉग स्मॉग कला माने स्मॉग माने कोन स्मॉग इज इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग हैला स्मॉग जो कि तमर विजिबिलिटी लेस देन 1 मीटर दैट इज कॉल्ड योर स्मॉग एंड अगेन इटी तमे देखुछो ब्राउन क्लाउड्स हैला ब्राउन कलर रे क्लाउड्स तमर रोच ब्राउन क्लाउड्स एंड दैट इंपैक्ट क्वालिटी विजिबिलिटी एंड द क्लाइमेट हैला एयर क्वालिटी को इंपैक्ट करछि दैट your impact your air quality visibility and climate air quality visibility and climate एगुडा को सब जंगु से एयर क्वालिटी भी खराब करछि जोटा कि एयर क्वालिटी जोटा कि हमर मपा होछि हला
एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI वर्तमान मेजर AQI ठीक है एयर क्वालिटी विजिबिलिटी जोटा कि कहली है विजिबिलिटी मेनली इट इज मेनली अफेक्टेड बाय कहबी इट इज मेनली अफेक्टेड बाय है स्मॉग SMOG स्मॉग है स्मॉग माने जोटा कि मुझे एटा कहली स्मॉग माने योर स्मोक प्लस फ्लॉग धुआं जो जलिकर धुआं होची प्लस फॉग है स्मॉग एंड द क्लाइमेट ओवरऑल पूरा अफेक्ट होची देखो गोटे सिचुएशंस जस्ट लुक एट द सिचुएशंस हियर skies over the northern India can you imagine northern India ऊपर sky केमती कलर देखा होची देखु जो एटी हैला see this one हैला पंजाब this is हरियाणा हैला देखु जो एटी एटा यूपी ठीक अछि एंड ए जगह देखो this is your particularly जदि हम कहबी this is your हैला न्यू दिल्ली ठीक है दिस इज न्यू दिल्ली दिस इज वेस्टर्न यूपी एटा जदि कहबी दिस इज योर वेस्टर्न यूपी हैला वेस्टर्न यूपी एई पार्टटा हैला एटा न्यू दिल्ली हरियाणा एई पार्टटा हेगला देखुछ दिस इज पंजाब आ एठी तमर देखुछ दिस इज आवर हैला हैला ये हमर रिलेटिव इंडिया रे रिलेटिव पाकिस्तान पाकिस्तानी देखो पहर दिन बाहर थिला हिंदू रे कोन से पाकिस्तान इज क्लेमिंग दैट लाहौर सिटी लाहौर जोटा हैला he mainly affected by this your haze warning from India. Pakistan is blaming India because Lahore is polluted because of India because of this problem. Hello? So it is none of our business because geographically or accidentally or unfortunately you are our neighbor. Okay. So that is why also you can see imagine here. So entire North India during winter is completely engulfed by this particular this polluted winds particularly or polluted air. Okay, we can say this polluted air completely engulfed or encircle the North Indian states in winter. Okay, this is your completely their North Indian states. हैला winter months रे कौन हुए your winter टिके still हे जाए हैला बेसी बहेनी that is what the problem कि winter India रे winter month रे कहीं सेटा aggravate होची particularly and again winter time रे कौन हुए sun is going your southern hemisphere dakhinayana हुए particularly sun is above the your tropic of Capricorn. Okay, so that is what this is the problem जो तरह की westerly effect रहे और इटी condense तमरा atmosphere कहीं ना chill wind that comes from your side area. ठीक अछि so we'll continue again this topic और भी बहुत जिनसे soil health ऊपर and other affects how your chronic diseases. Okay, what are the alternatives that come out to tackle this particular this stubble burning problems. Okay, we'll discuss later. ठीक है, thank you all of you, thank you. Not only does the burning of stubble increase the ozone concentration, केवल यदि हम कहबा कि it is not correct to say that one that burning of stubble increase the ozone concentrations apart from that in the atmosphere, but it can also raise temperature of the soil. माने soil रो temperature को भी enhance कर दिया, बढ़ी दिए soil रो temperature को, right? Of the soil, that is 33 to 42.2 degree centigrade. So can you imagine 33.8 माने almost 34 degree to 42 or 42 degree centigrade पर्यंत soil temperature टाको बढ़ी दिए. तमे निजे भाबो कोनोसी जगह रो जदि हम temperature हमें increase कर दोचुन तो automatically what कौन हबो तार जो भी तांकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थिबे ओके और इंग्रेडिएंट्स थिबे व्हाटएवर दे विल डिस्ट्रॉय सम डैमेज हे जिवे okay which results in changes to the carbon nitrogen equilibrium that eventually results in the changes to the carbon nitrogen equilibrium in the upper layer of the soil हैला upper layer of the soil रे carbon nitrogen equilibrium को that is affect करिवो हैला कार्बन मेन हैला कार्बन नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम से अफेक्ट करिवो सॉइल रो अपर लेयर रे
right? So in return जदि हम देखियो, okay, in return your soil nutrients are lost, है जोटा हम डिस्कस कले soil nutrients गुड़ा जो soil रो upper layer रे horizon रे that will be lost, and the organic carbon, basically organic carbon within the soil is emitted into the atmosphere. जो भी organic amount है सेठी कौन हबो, eventually they burn and vaporize, है evaporate हेकी समाने है atmosphere को समाने पळेबे in the form of CO2, है carbon dioxide, but हम कहले in the form of CO2, so causing severe atmospheric pollution. So एक तो एमती burning होची है जोटी हमें देखुचंदी कि these are the burnings which results, and apart from that soil health रे जो organic matters असंती they are also getting destroyed, they burn out and evaporate and becoming as CO2, right? Stubble burning जदि मु कहबी can negative impact on agriculture productivity. Stubble burning रा भी negative impact अछि agriculture productivity उपरे, हैला stubble burning रा productivity. It also destroys nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium that would be otherwise returned to the soil. Apart from that one, see कौन destroy करे कितने important देखो, that is nutrients like your nitrogen, phosphorus and potassium. Okay, that means we can say NPK, है मन रखो NPK जोटा हम कहउछंती soil health रो, these are the key element, nitrogen, phosphorus and potassium. Okay, these are the key element of your health. सबु जंक destroy हो जो these are the major nutrients for the soil or the crops to grow जोटा कि soil भितर थान. Okay, so and then or would otherwise return to the soil. तमाने निजे एठो हम टिके रियलाइज करबा कि स्टबल बर्निंग वर्तमान जो नॉर्थ इंडिया रे माने खास करी कि योर पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड योर नॉर्थ वेस्टर्न योर नॉर्थ ईस्टर्न पॉकेट ऑफ योर राजस्थान जोटा कि मेजर प्रॉब्लम वर्तमान. ओके, and how it is destroy the or affect the health, not only the health, apart from the health it also affect your major part, means I mean the soil health को केमती affect करछि. Okay, so that means the many microbes जो माने microbes, bacteria, those are the environment friendly microbe bacteria, they are also getting affected out of this. So वर्तमान देखिबा greater use of fertilizers, great use of fertilizers and pesticides केमती होछि आ विषय टिके देखिबा डिस्कस करिबा. In order to compensate for the loss of fertility, chemical based fertilizers and pesticides are increasingly used successively years. So कौन होछि, एक तो से माने स्टबल बर्निंग करी कि से माने जो नेचुरल फर्टिलिटी और नेचुरल ऑर्गेनिक योर कंपोनेंट को से माने डिस्ट्रॉय कर दोचंदी, न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से माने डिस्ट्रॉय कर दोचंदी, ताको कंपेंसेट करिया पे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दे आर यूजिंग. देखो माने एक तो गोटे आड़ प्रॉब्लम होची पुनी ताको कंपेंसेट करिया पे से माने आहुरी सॉइल को डिस्ट्रॉय करदी करा होची. ओके, आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन सक्सेसिव इयर्स ड्यू टू द डिक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. As a result of stubble burning, excessive use of chemical fertilizers, okay, recurrent wheat paddy cycles also. Okay, that is the major thing जोटा कि वर्तमान है major concerns की केमते रहउची. The use of chemical additives, particularly to strengthen the soil fertility, has also in recent years been able to cope up with the loss of fertility, right? Cope up with the loss of fertility. So these are the things जोटा कि हमें देखुचो. Okay, has been cope up with the loss of fertility. So we can say chemical जो additives होची strengthen soil fertility जो also recent years रे unable to cope up the loss of fertility. So these are the multifarious problem. हम देखो stubble burning पे तार माने recurrent problem गुडा केमती लागी लागी रहउची, माने गोटे सल्ला परे आगुटे को compensate करिया पे मुनी आगुटे. So these are the recurrent problems that arise only because of this stubble burning. Okay, let's proceed further. So stubble burning again impact on health. Health ऊपर कौन impact पड़ुची हमें तो गुडा discuss करले. Let's see no impact on the health. Health रे कौन रहउची, health ऊपर यदि देखिबा stubble burning emissions can cause respiratory infections. We can say stubble burning can cause your respiratory infections. We can say respiratory infections को से भी affect होची. कौन respiratory infections, that is lung cancer, other health issues, lungs cancer and other health issues also. The smog can also worsen the health conditions for people with chronic your obstructive pulmonary disease, that is COPD.
माने COPD वर्तमान देखा न्यू दिल्ली, your western UP, Haryana, Punjab and pockets of your Rajasthan, most of the peoples they are vulnerable to this COPD. That is your chronic obstructive pulmonary disease, basically that related to your lungs. Okay. So again, the health impact, the health impact of the straw burning, health impact of the straw burning, okay, straw burning range from acute respiratory infections, eye irritations, okay, acute respiratory infections, eye irritations, and also to skin diseases. Skin diseases also much prevalent. Those who are having normally having your weak skins, they are also you are confronting your many diseases like your skin burning and rashes, unnecessary rashes. Okay, and sometimes it leads to your infections. Okay, that's a chronic infections also. Researchers have highlighted several health implications from straw burning. Con including your coughing, emphysema, asthma, bronchitis, eye irritations, chronic capacity and skin diseases. These are the very regular, okay, that are occurring there. High level of CO2 in the blood can also convert normal hemoglobin into your deadly hemoglobin, reducing blood efficiency to take oxygen around the body. That means it is another high level of CO2. जो CO2 रो लेवल टा बढ़ी जाउची एटमॉस्फेयर रे कोन होची हमें तो इनहेल करछु, इनहेल कला परे इट कैन इन द ब्लड रे जेतला हमर बढ़ी जाउची ब्लड को आसी इट आल्सो कन्वर्ट नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऊपर से अफेक्ट करची, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करची हला इनटू डेडली हीमोग्लोबिन, रिड्यूसिंग ब्लड एफिशिएंसी. माने also this CO2 can impact, okay, to our hemoglobin also. This hemoglobin convert जोटा कि positive pump hemoglobin that convert into the deadly hemoglobin, that is with combinations of our CO2, and again it affect to the our blood circulation system. So catastrophic. Okay, next देखिए कौन more than 60% of the populations जदि कहवा in Punjab live in rice growing areas. जदि हैला not only either जदि for let's say गोटे case study रे देखा होइची पंजाब रो more than जदि तमे देखियो 60% populations they माने 2/3 of let's say 2/3 of the populations of Punjab they live in your rice growing areas directly हैला impacted by the air pollutions from stubble burning, and semane they are directly impact from the stubble burning. Okay, a study conducted by research foundations that there was 10% increase in patients admitted to the hospital. Okay, got a study, got a research to jana porchi 10% increase in the patient admitted to the hospital in rice wheat belt areas of Punjab within the 20-25 days of burning. ये जो कोड़ी जो burning टा होची तो सही समय गोटे केस स्टडी रे गोटे देखा कि within let's say 1 month भितरे माने near about 10% तमर जो patients admitted होचंती कोठी hospital. It is because of that they're affecting to severely to their your pulmonary systems particularly. Okay, a survey conducted by the 𝐻𝐿𝐴 Institute of Medical Science, okay, 𝐻𝐿𝐴 Institute of Medical Science and Research and the Associations of Physicians of India also found that, okay, 𝐻𝐿𝐴 Institute of Medical Science and also your Association of Physicians found that nearly 85% of respondents from the Bathinda and Muktar. Bathinda is a particularly a city in Punjab. Okay, it's a very developed city, Bathinda and Muktar. Bathinda and Muktar particularly district suffered from the at least one of health problems due to the smoke. They are also suffered from the one of the health problems due to smoke. Smoke stubble burning including nose, throat and chest irritation. Nose, throat and chest irritation. That means you can see how badly it is affected stubble burning in the district of your Bathinda and Muktar in Punjab. This is one example they found, particularly we can say that one, this 𝐻𝐿𝐴 Institute of Medical Science and the Association of Physicians. That means if we can say more and less the 2/3 of Punjab is affected from this one. This is one case study that has been conducted by this 𝐻𝐿𝐴 Institute of Medical Science and Research and the Association of Physicians.
So can you imagine now the if agar ye Punjab ka aisa haal hai, what is the conditions in Haryana, Delhi and your particularly inner pockets of Rajasthan? Many of my relatives are there in Delhi. Now today morning also I have talked with them. They they use some that one machines that purified the air in the room. This kind of situation has reached in Delhi. So now we have to think, the government has to think, okay, over this. Last mu kahibi kon jinsa heba darkar ahori bi. Acha, over that one again study shows that puni again what are the alternatives. So ya pare bhi hame discuss kariya what should be the alternatives to come out from such problems, right? Okay, study shows that the farmers have alternatives to stubble burning, but not all options are viable. Hello? Studies farmers have alternatives to stubble burning. So let us discuss what are the alternatives that these farmers should approach to avoid such problems, basically. Okay. Excuse me 1 second. Take a point of view. Again, the government has been encouraging the diversifications. Government has encouraging the diversifications of agriculture in such states. Okay, government has been encouraging. Government कौन करछि वर्तमान ए जो states मानकरे माने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और some and few districts of your Rajasthan, particularly your northern and northeastern districts of Rajasthan also. ए जगह government encourage कौन करछि diversification of agriculture. Let us know. Okay, such states allocating near about 2000 million or let's say 200 crores has been allocated to boost crop diversification in such states. These states would occur mainly government 200 crores allocate karche to boost crop diversifications. In theory, this would allow the farmers to move away from the rice wood cropping pattern. So government कौन चाहूची? Government एटा चाहूची farmer माने तांकर ए जो राइस स्वीट काली सेटा जिनस हमें अलग कि बुझैतिले वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट राइस अगेन व्हीट माने समर रे राइस कले पुनी विंटर आसु आसु से माने कोन कले व्हीट करबा स्टार्ट करले राइस को हार्वेस्ट कले संगे संग व्हीट को सॉ कले ओके सो ए जो साइकिल टा को ब्रेक करिया पई हला एमएसपी फार्मूला रे जाई कि ना समान कर एमएसपी अछि वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी एमएसपी पई एटा को ब्रेक करिया पई गवर्नमेंट कोन करछि दैट शुड बी एन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. Okay, so rice switch cropping pattern towards less water intensive crops and mitigate the effects of straw burning. So government is envisaging that this rice switch crop pattern, this monoculture has to be protected, has to be break. So less water retentive crops should be there, crop diversification rate, and of course it is in the long term it is mitigate the effects of this your straw burning or stubble burning. So let us know how far it is effective. तो गवर्नमेंट रे जो प्रपोजल टा रहिला कि पानी भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो रेट रे होची दैट इज आल्सो दैट कैन बी चेक्ड आल्सो स्टबल बर्निंग एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन तार द्वारा जो व्हाट इज द इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस दैट इज कैन बी स्टॉप आल्सो दैट इज ओनली थ्रू कैन बी अचीव्ड बाय द crop diversification, and that is why government has allocated 200 crores in such respective states, right? However, farmers are skeptical, okay, as experimenting these crops that are not backed by assured procurement. Again, government to eta chinta kala, kintu farmers mane eta bhabuchonti, farmers are thinking that they are very much skeptical, means doubtful that whether semankar jo minimum support price tanko miluthula seita au rahibo ki nahi. Okay, experimenting these crops that are not backed by, okay, that are not backed by assured procurement could leave them vulnerable at the hands of private companies. They are thinking that if such things arise, this particular the government the interference government would be minimized and the private companies will enter, so that those the farmers, the poor farmers, they may be affected or they may be vulnerable economically. Okay, that kind of insecurity, okay, emerging within the farmers community in Punjab and Haryana and Western UP states. Crop diversification again would also require new equipment training. Again, crop diversification कले कौन होरी होगा, है ना? क्या चीज और नया चीज क्या जरूरत होगा? Again it require new equipment
new equipment, training and infrastructure, all incurring an additional cost to the Punjab farmers. Again, all such things again arise that would lead to your new equipment, training, infrastructure. Okay, infrastructure develop kariya padibo, hela training debaku padibo farmers mananku, plus new equipment debaku padibo. So that is a massive work that again that the farmers are, why they are a bit reluctant to adopt this crop diversification. But this is again goes on. Okay, additional cost to the Punjab farmers. So again see, this is I am saying happy seeder tractor. Let us discuss what is happy seeder tractor. Okay, so again researchers have again suggest that farmers could hire, again researchers what they suggest, research mane suggest kale ki farmers could hire temporary labor, they could hire temporary labor to collect the paddy. So in the meantime researchers mane study kale kon farmers could hire, someone hire kar paribe temporary labor to collect the paddy. Okay, to collect the paddy to avoid stubble generations. Okay, stubble generation, collect paddy to collect karibe au stubble generation. Okay, and to avoid the stubble generation. This would serve two purposes. Data purpose have bhitar solve hobo. Okay, so creating employment, first thing hala there could be particularly researchers mane kahile by doing this activity, hiring the temporary laborer, two your purpose can be solved. One is your creation of your employment, first thing creation of your employment laborer within Punjab, Haryana, and also mitigating your need for burning the paddy. Hala paddy burning ta second ta jota tamara paddy burning hoche stubble burning, that also can be checked, right? However, these options would extremely unprofitable. Okay, this particular your option that is extremely unprofitable. Profitable no for farmers, as they would have the pay laborers to conduct the work. Okay, pay laborers to conduct the work. Many laborers have also returned to their native states since COVID-19. Again, so farmers mane kon bhabile ki this option would have extremely unprofitable for the farmers, as they would have to pay the laborers to conduct the work. So farmers mane bhabile ki eta tanga pai profitable haboni, eta to tanga upare mane semane only because to maximize their profit. They think that by adopting this kind of your proposal, this could have again extra burden to their finance part. Okay, because they have to pay the laborer for that one. So many laborers also returned. These are the case study which was conducted during the COVID-19 pandemic, right? So say many laborers, they came back from the outside because of your life threatening that viral diseases that was widespread 5 years back, okay, to their native state since the COVID-19 pandemic, providing the farmers another reason to burn stubble to clear the field quickly. Okay, so but some cases रे कौन देखा है कि COVID-19 pandemic रे जो laborers माने आसिले, this also farmers माने को गोटे space देला कि सेमान कर quickly तंका burn out करिया पे. तमाने there is an debate in between the farmers, some are saying that this is not profitable, some are saying that yes, we can clear as soon as possible the stubble, right? So so again, we are discussing the background, what happened due to the stubble burning, the entire procedures. These discussions we can very important for your GS point of view. Also, you can put it in your essay paper also. That will also help you out, right? So we can say the happy seeder. That is an happy seeder tractor. Another is there. That is an happy seeder tractor is there. Happy seeder tractor. Okay, tractor that has been introduced to the farmers as an alternative to straw burning. Another is that is your happy seeder tractor. Happy seeder tractor, that is an alternative to the straw burning. See this one. This is a tractor, we can say. This tractor, these are having these jaws, iron jaws, जोटा कि कौन होची field रे that particularly सेटा कौन करची seared करची, shred करकी से माने से particular stubble को root saw से पूरा ऊपर को उठे दोची. This is one tractor
a farmer is riding across the fields, paddy fields. Okay, so happy seeder tractor, what happened? Again, this tractor has been introduced to farmers as an alternative to the straw burning. The tractor allows farmers to easily shred the soil, okay, shred the soil, which in return enriches the soil by helping it to retain moisture, improving overall soil quality. So, ये जो कौन होगा, ये जो particular tractor allows farmers to shred the soil, है ना? Shred माने particular जो thin layer soil टाको से वो turn out कर दबो, है ना? ताकू चिरी दबो. Turn out कले कौन होगा? Obviously जो stubble burning जो root टा थी वो farm में किसी ना कौन होगा? सेटा उपड़ी आसीबो. That will be completely off-rooted. We can say that one. That is easier for to extract completely with root that particular your remaining part of the crop residue, right? So, according to a study also conducted by the Shyam Sundar, okay, there is also another study that is conducted by the Shyam Sundar in 2019. The happy seeder over time is 10% more profitable to farmers than the burning options. So, as per a study conducted by, that is also particularly it gives an idea that happy seeder gave the farmer 10% more profit than to the farmers than the burning options. Okay, than the burning options, you can say. The adoptions of the happy seeder also faces obstacles. Happy seeders, it also faces obstacles as machinery cost, limited incentives to the change practices, and uncertainty among the farmers of new technologies. And there is an uncertainties to the farming of new technologies, right? The machine can cost up to near about pound 11,230 pound. That means particularly I can say 11,000, let's say 230 pound. Okay, or this is sterling. That is, let's say multiply into, let's say 100. That means it is near about 11,23,000 rupees. Mane pakhi tara cost of 11 to 12 lakhs. Pakhi this is cost is so high. Okay, what is the problem for that one? The adoption of happy seeder also faces obstacles. Because of its machinery cost and limited incentives. Okay, limited incentives with incentives are not much more. जमती वर्तमान EV स्कूटर किनले हला गवर्नमेंट सब्सिडी रेट दोची, ओके, डिस्काउंट दोची, सेमती ए हैप्पी सीडर नतला. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, ओके, लिमिटेड इंसेंटिव्स एंड मशीनरी कॉस्ट to change the practices and uncertainty among the farmers. The machine cost which is very heavy upfront cost to any farmer. Of course, any 11-12 lakhs is not much higher cost to a farmer. So government should think on that line, that how to help. Either they could provide the farmers through an particularly we can say to the farmer in an particularly rented cost, one monthly one has to pay for that one. Okay, and those who can afford the tractor are faced with the long waiting times. Again, these barriers could be addressed by the government and private sector. That could be addressed by the government and the private sector as well. Private sector investment through the combinations of grants and rental schemes that could entice the farmers to make switch. So this can be dealt with properly, addressed by the government and private, okay, private sector investment through the combination of the grants and rental schemes that could entice the farmers to make the switch. So all total, we can, if we go put the rational part of this subject, we can say that one, this is not as easier to expect the farmers to purchase the machinery, high cost machinery, which is comes around at least 12 lakhs around, okay, and to mitigate such, government has to think, and public private partnership and government and private sector bodies has to indulge and think a good options how to use this machinery so that this long term effect can be mitigated. Okay, so we can say the Indian Agriculture Research Institute, okay, in the other side we can say the Indian Agriculture Research Institute developed a biocomposer, okay, to turn the crop residues manures into 50 to 20 days. So ICAR has played a very significant role for
for giving an options. What happened? ICAR, what? Indian Agriculture Research Institute. We can say that on IC, Indian Agriculture Research Institute. Okay. Sorry. Indian Agriculture Research Institute. Okay, IARI developed a biodecomposer to turn crop residues into manure, that is manure into in 15 to 20 days. 15-20 din bhitar lagibo. After this period, it has to be dried under the direct sunlight for a few days. After certain period, it has to be dried under the direct sunlight, okay, for a few days, and then compost is ready to use. So what this agriculture research should they suggest that one, this after that this biodecomposer, they should directly they're exposed to the sunlight, and eventually they're getting dried, okay, after few days, and then they can ready this compost ready to use as a manure for the your successive or next crops to be while sowing. But how far these alternatives could be useful? Okay, so let's see. Although this method is relatively cheap, jadio ei method ta relatively cheap and sustainable. Sustainable means your cheap and sustainable. Sustainable means your future time, this is without any damaging, it can give a good result. Sustainable, okay, without any breakage. The product success in the field is yet to be studied. Still, these farmers are not yet, okay, are convinced for this one. Why? Again, saburi mulari materials gotte jinsa manraka, they are a profit, MSP, minimum support price. Farmers, they are a bit skeptical or doubtful that this particular process might get hamper their profit, that the minimum support price they are getting from the government. Okay, but this should be dealt in a very rational way, in a long term effect. So we can say further another studies is there, that is your other potential solution to the stubble burning. This is also another part we have to discuss. Okay, so what could be other things? So each particular point potential solutions that is mainly where our the father of Indian agriculture scientist, the late Sri M.S. Swaminathan, has given also his viewpoint regarding the stubble burning. Okay, so let us know this. Remember, this particular subject discussions is very much important for your preparations for in civil service GS paper and also in AC papers also, that will enhance and boost your knowledge building and overall idea that what is going on exactly. Okay, so let's see. Other potential, what in order to ameliorate the problems of stubble burning, means mitigate or to reconcile the problems of your stubble burning, the following recommendations are proposed. Okay, following recommendations are proposed. Number 1, commercializing paddy straw. Commercializing paddy straw as a viable solution to the stubble burning was proposed by our scientist, late scientist Sri M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan was recommended or suggested for commercializing the paddy straw. Means commercializing paddy straw means this straw can be utilized, okay, to attract the farmers, their mindset, that he said that this straw can be utilized. Let us know, this is very interesting to know, okay, how it can be commercialized. He said that his recommendations on the agriculture. At present, the government of Haryana and Punjab, okay, Haryana, Punjab aims to people crop residue management by targeting farmer needs. Okay, people crop residue management by targeting the farmer needs and providing each administrative entity a privately owned but subsidized the infrastructures to create to the situation. So Punjab and Haryana, these governments there, this is crop residue, people crop residue management system. They are targeting the farmer needs and providing each administrative entity a privately owned and subsidized infrastructure to create the situations. Okay, so this, see, backdrop, this particular, yesterday we have discussed that particularly, again हम लोग डिस्कस किए थे, what we have discussed, क्या डिस्कस किए थे, 1973 से लेके 2013 तक 40 years there is an rampant growth of this paddy cultivations.
but after 2013 government realized that something is going to wrong and affecting our entire ecosystem, not only to the atmosphere. Okay, so now the things are intensified. Government is more realizing, more taking initiatives to mitigate such problems. Second point, crop residue management machinery, okay, must be productive, must be procured effectively. The present customer hiring center, there is a concept called customer hiring center of the government in such states. So particularly Punjab, Haryana and Rajasthan, these states government has produced customer hiring centers, that is called your CHC, customer hiring centers. Okay, so government of such states, which establishment is subsidized up to 40% is private enterprise responsible for providing technological infrastructures for the crop residue management to the farmers. So इतरे कौन है कस्टमर हायरिंग सेंटर्स रे है particularly है कस्टमर हायरिंग सेंटर्स रे गवर्नमेंट कौन कला इस स्टेट रे प्राइवेट बॉडीज को रेस्पॉन्सिबल करेला एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग योर फॉर दिस एंटरप्राइजेस रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टेक माने 40% प्राइवेट है प्राइवेट एंटरप्राइज कौन है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सब्सिडाइज अप टू 40% रहइबो जोतरे की प्राइवेट बॉडीज माने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रॉप residue management to the farmers. Okay, so a type of government schemes kala जोथरे की प्राइवेट एंटरप्राइज योर तांकर इंक्लूजन छै कि ओके सेतरे 40% सब्सिडीज मिलिबो ओके ए जोथरे की प्राइवेट एंटरप्राइज कर इंटरफेरेंस रे. थर्ड रे कोन देखिबो अच्छा अगेन सेकंड रे however it is important to have administrative checks and balances for the effective management and functioning of the institutions such as CSCs. Since it is a private inclusion जो 40% रहुची एथरे कोन हबो एडमिनिस्ट्रेटिव योर मशीनरीज भी बसिबो that they just check and balances because private party जदी indulge हेले so again there is an there is a chances of your monopoly. So to curb this, to control this, there must be checks and balances to the administrative machinery provided by the government. Okay, so without adequate checks in the long run, entities such as CSC may drift away from their objectives of your farmer welfare. So, of course, the very process to check this monopoly, the very objective of CHCs, establishing CHCs is to be you are drifted away. That the main purpose is your welfare of the farmers. Okay, that is why this your checks and balances has to be executed from the government administrative bodies, right? So third point, the Central Electricity Authority, we can say. एक second. Again, the Central Electricity Authority, that is a government of India. So these 2 points we have discussed. Again, the CEA, Central Electricity Authority, the government of India, has directed the use of stubble, but is that 10% of the total raw material, we can say. Okay, that is 10% of the total raw material in thermal power generations particularly. Okay, thermal power generation particularly count about 10% of your 10% of the total raw material. In accordance with this directive, the National Thermal Power Corporation is issued documents stating interest in the use of stubble batiks as an alternative source of fuel to the thermal power plants. Okay, particularly this government has again given order particularly, and if we say this one this last budget also, the government makes it mandatory to use this stubble as your biofertilizers. Okay, we can say to the you are directed the use of stubble batiks 10% of the total raw material they can use as an particular 10% raw material in your thermal power plant for your generating your as an fuel, we can say. Okay, is particularly as an fuel. See, another thing you can see as an your माने जदि हमें देखिबा कि particularly stubble 10% एमने जो भी तमे देखिबो कि गवर्नमेंट जो करूची 10% से मानकर जो फ्यूल सपोज मुके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस करिया पे योर 100% कोल इज नीडेड. So apart from that, coal is your what? In coal productions, that is your heat calorific value, जोड़ा कि जलिबो. So again, this particular straw, माने this this stubble or we can say straw
they are contributing your 10% of your electric generation and they make as an fuel use, and this is now mandatory. So who took the initiative? Yeah, this is your NTPC, that is National Thermal Power Corporations, and PSU, okay, public sector enterprises, a public sector unit of Government of India, has taken this initiative, because NTPC is your pioneer of your electrical thermal power generations in India, right? So of course it is an alternative source of fuel for its thermal power plants. So it is an, again we can use alternative source of fuel. See what a magnificent idea is. Alternative source of fuel in producing in thermal power plant, right? Next, fourth, biogas can be produced by using any form of organic material including stubble. Again, now next point in your covering about the biogas can be produced by using any form of organic material including your stubble. Use of stubble and other organic material in biogas plant. See, that is also we know. जोटा कि आमे को गोबर गैस है, गोबर गैस माने पर्टिकुलरली कौन फर्मेंटेशन हुए, ऐसे योर जदि देखिबो बैक्टीरियल योर फर्मेंटेशंस हुए एंड मीथेन प्रोड्यूस हुए. मीथेन प्रोड्यूस होने कौन हो योर दैट अगेन प्रोड्यूस योर दिस मीथेन दैट प्रोड्यूस योर gas to your for your domestic cooking. We can use that one, domestic, for the domestic cooking. Again, this biogas produced by using the form of organic material in stubble. Stubble and other organic material in biogas plants yield to biogas with methane as its prime component. As now we have discussed methane as the prime component. Any organic substitute, if you decompose, then methane will generate. Okay, so this is that also helps for your domestic heat productions. Okay, instead of using your gas cylinder, okay, that we can use this biogas as an alternative of for the cooking, domestic cooking, and organic slurry as byproducts of your byproducts. Okay, and also this is organic slurry that can be produced, and this organic slurry that can be used while in your cropping system or cultivation of the crops, whether it is your wheat or let's say rice or other your crops also. Again, both methane and organic slurry are highly commercially viable. They are highly commercially viable products. Okay, methane is widely sought after is the fuel in multiply industries, is also cleaner to the fuel use. Since we know, again, these are highly commercially viable, both, that is your methane and your organic slurry. Okay, so in fact has potential to recover the cost of biogas plant in 7 years. Meaning, even if these are so much potential, this methane and this organic slurry, methane and organic slurry, they have the potential to recover the cost of the biogas plant in 7 years. Meaning, if one farmer, he should make convince about that one, that suppose you are establishing a biogas plant. Okay, for such biogas plants, the cost that recurred or cost that incurred by the farmer, that can be compensated within the 7 years from the profit from this made from this your organic slurry and your methane. Okay. Okay, point 2, that can be recovered as reported by the electric gas technology in Canada 2017. And who has did this? This one company named Electric Gas Technology, that is in Canada, and this report has published in 2017. Okay, so now it is more important that Indian farmers, particularly North Indian pockets farmers, they should realize, they should make convince. Okay, this government machinery should be there. They should convince and make aware these farmers what is the importance of such methane and these are organic slurry. We can say stubble has immense usage of horticulture, basically immense use of horticulture, especially mushroom productions, which can be widely encouraged using the waste stubble. Again, now self-help groups, though we can say how stubble can help the self-help group SHG. Again, mushroom production is also, see, now India is a self-reliant India, where Atmanirbhar Bharat, that concept is now the main agenda of our Prime Minister. Okay, to make the youths your economically independent, and India is going to be self-reliant, that is Atmanirbhar Bharat. So how stubble is going to help for this ones? So mushroom production, let us know, mushroom stubble has immense usage in horticulture, especially in the mushroom productions. Mushroom farming, we can say, mushroom farming, okay, mushroom farming by your stubble is very much important, stubble farming.
use of stubble in mushroom production if done in the form of a cooperative where individuals from a community pool, their stubble and other resources in production and sell their produces as a group will help increase their incomes both using stubble waste and your crop diversifications via through the crop diversification. So let's see how it is going to help for this one. For instance, according to statistics, one survey has been conducted, and as per the statistics, 1 kilogram of mushroom produced around 4 to 5 kilograms of stubble. Can you imagine 1 kilogram of mushroom can be produced by 4 to 5 kilogram of your stubble or straws. Okay, so almost see this is alternative things that can farmers should know how the stubbles can help to them. Okay, is required. Establishment of such mushroom production units therefore can provide useful addressing concerns of environmental degradations and sustainable agriculture and waste management. So can you imagine this proof that can be useful for your concerns for your environmental degradation. Environmental degradation that can be also checked. Also, it is a sustainable agriculture practice, this mushroom cultivations, because mushroom is always in high demand. Any types of restaurant, hotel, in fact domestic also there is a high demand of mushrooms. So we can say 1 kg of mushroom can be produced by using this 4 to 5 kg of stubbles. Okay, culture and waste management. Again, 7, the Haryana bioenergy policy we can say in 2018. Another, okay, 7th point, policy presents that fact that the state has 8,460,000 tons of surplus biomass available for your bioenergy and ethanol productions. If we go for that one, okay, Haryana, that this use about 8,500, let's say 8,400 tons of your surplus biomass available for bioenergy and ethanol productions. Haryana, that particular Haryana bioenergy policy 2018, they have studied that one near about 8.4k tons. Okay, your surplus biomass available for your bioenergy and ethanol productions. We can ethanol is an in the coming your decades of India. Not only India and also for the globally, ethanol is an in a substitute for your vehicle running particularly. Okay, there are huge incentives, exemptions, huge incentive exemption and tax holidays provided in the policy which can use towards the incentive energy productions from the stubble. Okay, so how see this one, how beautiful this one, we can say this productions of ethanol can be done from this use from this wastage of your surplus of your biomass, surplus biomass can be. Okay, again from the stubble. So again you can say establishment of stubble banks in villages. 8th point, again establishment of stubble banks. Then how to do such all things, what we have discussed. Okay, then all such can be done when the stubbles are accumulated at a point or they are collected at a point. For that, stubble banks are established in the respective villages. Okay, in the villages in the respective states. Respective states, stubble banks or villages, blocks, or that in the district level where the farmers can deposit their stubble instead of processing it individually. So what happened? This particular monetary benefit, okay, can attract the farmers to deposit their stubble that can be collected from your farming land, whether it is on village level or your block level or state level. They can deposit there, okay, in the stubble instead of processing individually. Okay, could also make a big difference to the ecology of the states. That also can make a big difference to the ecology of the states. So how beautiful this one, you can say this one. If we think actually in a long term, it can be very beneficial for the farmers community. But how it is going to implement, that is the more questions now. Okay, so last you can take such stubble banks can be great collections points of stubbles for those involved in the processing, thereby saving them your effort and financial resources. So बर्तमान जदि आम डिस्कस करवा कि लॉन्ग रन रे जदि इंडिया जदि देखिबो ये जो पर्टिकुलर स्टबल बर्निंग जदि चेक न करा जाए, इनफैक्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया which contains or possesses a massive your percentage of populations,
Okay, they are badly going to affect their health, and not only the your health of the people is affected, it is also affect to the your populace there, we can say to the entire ecosystem also. Okay, so these are the entire topics that we have already discussed. Okay, now thank you for all your this particular this topic will help you out all. Okay, so thank you. We'll again you're coming with your different another topics also. Okay, thank you all of you. Thank you. Good day.